This also full. Hello everybody and welcome back to SK Manikis, and we're back live once again. And this is something. It's coming too dark. Okay, so here we have someone. Sarim, यहाँ पे नीचे रखो बेस्ट रहेगा. नीचे? हाँ, ये ना ये टेबल लेके हम लोग जमीन पे बैठ जाते हैं. ठीक है? Okay. वही सही रहेगा. देखो ब्लैक आ रहा है. मैं उठा के कर दूं? हाँ? Guess it's too. अरे वाह, यहाँ बैठ जा नीचे. It's perfect. And here we have so there are so many people. Harshvardhan, hello Sarim, hello. And Mohammad Pravez, hi Sarim, hi. And Rishabh Sharma, hello Sarim, bhai. Pancha, actually I'm not getting that. I'm your subscriber. Oh, thank you. And Kuber Mewari, namaskar bro, namaskar. And Sayyid Tutorials, assalamu alaikum, walaikum assalam. Chandan Kumar, hello bhai, hello. RY Dragon 714, which school are you are in? मैं बेसिकली करंटली तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, बट एक्चुअली आई स्टडी इन एक्सपेडिशन एकेडमी, जो कि हाटा में लोकेटेड है इन कुशीनगर. एंड अरशद खान, अरे बाबू हम भी हैं. वेल, अस्सलाम वालेकुम. Okay. Harshvardhan, hello Sarim, what are your plans for exams like JEE? Will you appear for it? Well, I will look at that time, क्योंकि मैं currently JEE या फिर NEET, no, I can't even think of NEET, क्योंकि मेरा particular, I'm rather much oriented towards mathematics side. तो मैं JEE के लिए specifically plan नहीं कर रहा हूँ, since मुझे study करना है, मुझे research करना है, and that is the thing, कि मैं JEE या फिर engineering, I won't go for it, बल्कि I'll give exams like KVPY and all. KVPY, and I'll definitely try for Olympiads. Aryan up now 53. How to start physics at 0? Physics at 0 basically, अगर आपको 0 लेवल से स्टार्ट करनी है, सो आई एम एज्यूमिंग कि आप फिजिक्स को एज रिक्रिएशनल पढ़ना चाहते हो, जस्ट फन के लिए पढ़ना चाहते हो. इन दैट केस व्हाट आई कैन से इज आप कोई भी नॉर्मल से फिजिक्स की बुक पढ़ सकते हो. लाइक that's the first one that I read, A Brief History of Time by Professor Stephen Hawking पढ़ सकते हो. And Stephen Hawking की बाकी books हैं like The Grand Design by the same author, Brief Answers to the Big Question by Stephen Hawking. उसके अलावा there's the book The Elegant Universe by Brian Greene. ये सारी बुक्स पढ़ सकते हो. लेकिन अगर आपको एक्चुअल में टेक्स्ट बुक की स्टडी करनी है, उस केस में you will have to go physics from 0 level. तो आपको कैलकुलस तो आनी चाहिए, प्री कैलकुलस, एल्जेब्रा एंड ऑल, वो सब आने चाहिए. तो अगर आपको कैलकुलस एंड एल्जेब्रा आता है, यू कैन गो फॉर द बुक कॉल्ड ड्रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर. बस मैंने वॉकर पढ़ा है एंड इट्स रियली अ ग्रेट बुक. Oh yeah, Astrophile Jayanta, KVPY बंद हो गया है. Oh yeah, I'm sorry, I rather said कि I'll appear for KVPY. I just remember KVPY is like बंद हो गया है. Okay, Gayatri, Pulsungi, time dilation. टाइम डायलेशन बेसिकली फिजिक्स का वो कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में टाइम डायलेट होता है, मतलब टाइम डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए एक डिफरेंट रेट से फ्लो करता है. इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट सिचुएशन में टाइम का जो फ्लो होगा वो आपके लिए डिफरेंट हो जाएगा. दैट इज द थिंग. ये रिलेटिविटिकली दो तरीके से हो सकता है. स्पेशल रिलेटिविटी ये बताती है कि कोई ऑब्जर्वर जब मूव करता है उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है. जनरल रिलेटिविटी ये बताती है कि अगर हम लोग किसी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इसका मतलब हम लोग किसी बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट के पास है, इसका मतलब हमारे लिए वहां पे भी टाइम स्लो डाउन हो जाएगा. एंड स्टडी करो सारिम, आई वांट यू फॉर माय थ्योरी. वेल, मेरे जो रिसेंट वीडियोस हैं वो ऑब्वियसली थ्योरी के ही हैं. आई एम मोस्टली कवरिंग वन शॉट वीडियोस, दैट इज द थिंग. एंड wow, this is really great question.
Asia, can you explain why gravitational force is the weakest among all the forces? Well, to be truly speaking, हमें नहीं पता है कि gravitational force सबसे कमजोर या फिर सबसे weakest force सारे forces में कौन सी होती है. This is a lot weaker force than comparing it with electromagnetic force, the strong nuclear force and the weak nuclear force. एक reason हम लोग mathematically ये बता सकते हैं, न्यूटन का law use करें, क्योंकि हमारी जो universal gravitational constant होता है उसकी value बहुत कम होती है. But then the question comes कि इसकी value कम क्यों होती है? So to be truly speaking, we don't know why gravitational force is the weakest among all the forces. But maybe in case ऐसा हो सकता है कि जब हमारे पास एक unified field theory हो, एक complete theory of everything, तब हम ये सारे phenomena explain कर सकें. Harshvardhan, what is studying in physics, mathematics and physics nowadays? Mathematics में basically I'm studying a book of graph by G. Tiwani, and in physics I am studying currently university physics with modern physics. Since वो textbook I'm about to finish it in a number of days, in a few days. Okay, 99. Hello, bro. Any advice? Sorry, advice for JEE Advanced, which is going to happen on Sunday. Well, to be truly speaking, मुझे information नहीं थी कि JEE Advanced Sunday को होगा, but if that is so, it's really exciting, and it will be a really fun thing. कि इस बार भी JEE Advanced के questions solve करेंगे. Previous year के questions were interesting, but rather easy. तो इस साल विल रियली सी, क्योंकि इस साल नीट में भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे, जेई मेन में भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे. सो आई वांट टू चेक जेई एडवांस्ड में इस साल के क्वेश्चंस कैसे होंगे. सो दैट इज द थिंग. एंड एक्चुअली यू आस्क इट फॉर एडवाइस, राइट? फॉर एडवाइस आई वुड से कि सिंस अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, दैट्स 1 वीक रिमेनिंग. In case आपका syllabus complete नहीं है, so you should, of course it's tough thing to complete the syllabus of entire 2 years in just a week, in just 7 days. That is the thing, but keep studying, and I am assuming हर किसी का syllabus complete हो ही गया होगा. Just keep revising and give mock test. That is the thing. Okay. Here's Atyush Yadav. Please answer why a machine cannot be used as a speed and force multiplier simultaneously. Actually, I'm not really sorry getting your question. So, if please you can understand, sorry, you can explain your question in a, so that I can understand. Then maybe I'll be able to reply. Okay, Priyanshu Singh, best book for JEE Mains and Advanced Physics, Chemistry, and Mathematics. फिजिक्स में आई वुड से एवरीबडी गोज फॉर एचसी वर्मा. एडवांस लेवल के लिए दैट्स आईई इरोडो. केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में मुझे नहीं पता है, बट इन मैथमेटिक्स सिंगेज या फिर अरिहंत की सीरीज की बुक्स आई हर्ड दे आर गुड, एंड आई इवन हैव द अरिहंत की सीरीज के बुक्स. इन केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी से आई गेस एज पीपल से हो ही जाते हैं, एंड उसके अलावा वी कैन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम अदर बुक्स. Rishabh Sharma, hi, I'm a big fan of Sir Isaac Newton. Not underestimating you, but very less people can understand it. आपको कितनी समझ में आई उनकी प्रिंसिपिया? एक्चुअल में प्रिंसिपिया बेसिकली एक ऐसी बुक है कि वहां पे ना जो भी चीजें हैं वो कैलकुलस के फॉर्म में नहीं, बल्कि rather algebraically explained है. एंड सिंस वो सारे लॉज अगर कैलकुलस के बिना algebraically या फिर rather geometrically, more of geometrically देखने, that's why it gets complicated. And to be truly speaking, प्रिंसिपिया मुझे भी बहुत समझ नहीं आई है, and I'm still working on it. Okay. PCM universe, I have a question that I studied that matter can neither be created nor be destroyed, but it can exchange its form from one to another. So I think how matter come to this universe, how it came and exist. Everything began जब Big Bang हुआ था, that kind of explosion or say that kind of expansion, and उससे पहले क्या हुआ, nobody knows. We cannot explain it with any scientific theory yet. तो इतना मैटर यूनिवर्स में आया कैसे? बट व्हाट वी कैन से इज इतना मैटर ऐसे आया कि जब बिग बैंग, एट द टाइम ऑफ बिग बैंग क्या हुआ था बेसिकली, जो हमारे फोटॉन्स थे, लाइट पार्टिकल्स, दे वर जस्ट क्रिएटिंग, सिंस ये एनर्जी है एंड एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू इक्वल्स एमसी स्क्वायर, तो ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल की पैर में क्रिएट हो सकते हैं.
So maybe that was something kind of say this kind of situation जब there was more matter than antimatter, जिसकी वजह से मैटर एंटी मैटर एनिहिलेट होने के बाद भी देयर इज एडिशनल मैटर लेफ्ट इन आवर यूनिवर्स. सो मे बी वी डोंट नो एनीथिंग येट. Okay. Here is Vibha Jan. Hello, sir. Please reply. Self study is enough for JEE and IIT without coaching. Obviously, it is enough. बहुत सारे लोगों ने self study से obviously IIT को क्रैक किया है. कोचिंग में वहाँ पे फायदा क्या होता है? कोचिंग में फायदा होता है आपको उनके मटेरियल्स मिलते हैं which is particularly designed for that particular competition. टीचर्स आपको concept explain करेंगे and उसके अलावा you have some other like there are some if you're considering it some other profits of coaching. लेकिन basically what I can say कि जितना sufficient basically हम लोग बोल सकते हैं उसके लिए self study is also sufficient for JEE. All you need is passion, hard work, and it can be done. Uh, Innocent boy, bro, any powerful advice for speaking English? इंग्लिश बोलने के लिए एक्चुअल में मैंने एक वीडियो भी बनाया, यू कैन वॉच दैट. या फिर व्हाट आई कैन से करेंटली इज जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जिससे भी आप बात करो इंग्लिश में बात करो, दैट इज हाउ यू लर्न इट. रीड इंग्लिश बुक्स एंड गेट वेल योर एंड यहाँ पे जो आपकी वर्ड पावर है, इंक्रीज योर वर्ड पावर. दैट इज द थिंग. ट्राई टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स इन डिफरेंट सेंटेंस. आई शुड बी रादर से इन हिंदी कि जितने भी आप वर्ड सीख रहे हो उन्हें डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश करो एंड जिससे भी आप बात करे हो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो. दैट इज हाउ. परवीन खातून, वेयर आर यू फ्रॉम सर प्लीज? वेल आई लिव इन अ डिस्ट्रिक्ट नेम्ड एज देवरिया इन उत्तर प्रदेश. टीम KTX1 explain string theory. Well, string theory वो theory है physics में which claims to be a unified field theory. इसके according जो हमारे matter particles होते हैं फंडामेंटल लेवल पे वो डॉट्स या फिर पॉइंट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बल्कि एट द मोस्ट फंडामेंटल एंड एलिमेंट्री लेवल ये मैटर पार्टिकल्स बेसिकली वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं. ये कुछ स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि डिफरेंट वे में वाइब्रेट करते हैं तो हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं. स्ट्रिंग थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि डिफरेंट पार्टिकल्स के पास डिफरेंट मासेस या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर दूसरे चार्जेस क्यों होते हैं, क्योंकि दीज आर जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ वाइब्रेशन. दैट इज हाउ इट इज and yet we haven't proven it. Sunny Galgat, what is differentiation? Differentiation basically वो process है mathematics में जब हम लोग limits लेते हैं. Well, to be talking from a mathematical point of view, it will be actually more difficult since I understand differentiation from rather physics point of view. तो हम लोग basically क्या करते हैं, अगर आपको से velocity at an instant चाहिए कि आपने time limit को zero कर दिया तो आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए, आपको कैसे मिलेगा? और रादर टॉकिंग अबाउट इट ऑन अ वाई एक्स ग्राफ. या तो अगर हमारे पास वाई एक्स का ग्राफ है जो कि एक कुछ ऐसी कंटिन्यूअस कर्व है हमारी, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्लोप चाहिए तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग एक टेंजेंट बना सकते हैं जो एंगल थीटा बन रहा है, द tan ऑफ दैट थीटा. बट टू बी एग्जैक्टली मेजरिंग दिस tan ऑफ एंगल थीटा, सिंस हम लोग जब tan ऑफ एंगल थीटा बनाएंगे उसके लिए एक ट्राइंगल चाहिए होता है. दैट इज द थिंग. तो हम लोग दो डिफरेंट पॉइंट्स को ले सकते हैं ऑन दिस उन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो कम करते जाते हैं जब तक दोनों पॉइंट्स की ना जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स नियरली इट एक्चुअली नेवर अप्रोचेस जीरो. ये नियरली जीरो नहीं अप्रोच कर जाता है. तब ये जो वाई एंड एक्स की वैल्यू इतनी छोटी हो जाती है डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स, इसे हम लोग डी वाई एंड डी एक्स बोल देते हैं. tan theta is nothing but delta y by delta x. यहाँ पे हम लोग एक we call it a function कि हम लोग लिमिट लेते हैं कि जैसे डेल्टा एक्स नियरली जीरो अप्रोच हो गया, वो दोनों पॉइंट्स बहुत ही क्लोज आ गए कि हम लोग एक सिंगल टैंजेंट बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ कॉर्ड. मतलब उस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं. So that is nothing but the rate of change of this y with respect to x. So we say limit of delta x as approaches zero, delta y by delta x जिसे dy by dx से represent करते हैं. And okay, उमेश सान, न्यूमेरिकल्स अगर एक बार कर लिए हैं तो क्या अगली बार फॉर्मूला एंड मेथड्स को रिवाइज करके पेपर्स एंड टेस्ट दे सकते हैं? ये तरीका सही है क्या? गिव एडवाइस. सो यू आर सेइंग
कि न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने एक बार कर लिए, फिर फॉर्मूलाज एंड मेथड्स को रिवाइज कर देंगे एंड पेपर्स एंड टेस्ट दे देंगे. वेल एक्चुअल में आई विल से कि मैं रादर व्हाट आई पर्सनली डू कि मैं कभी भी फॉर्मूलाज एंड मेथड्स को रिवाइज करता ही नहीं. आई एम टेलिंग इट फ्रैंकली कि मैं फॉर्मूलाज मेथड्स को कभी रिवाइज नहीं करता हूँ, मैं फॉर्मूलाज याद भी नहीं करता हूँ, बट रादर इन प्लेस ऑफ इट मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ा फिर मैं उसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ. डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम इजी टू टफ मॉडरेट, मैं डिफरेंट काइंड की न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ. Since right after just reading the theory कि कैसे what is going on, like if you are reading something like electromagnetic induction, तो वहाँ पे बस studying about electromagnetic induction, Faraday's law of induction, I really don't care about the formula, बस while I'm reading that so I keep the formula in mind. लेकिन जब मैं electromagnetic induction की problem solve करूँगा, so I will need formula, so I just take the formula from the text and solve the equations using that. But while again and again solving, कि जब मैं अगेन एंड अगेन डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सो दिस फॉर्मूला ऑलरेडी गेट्स इन योर माइंड, सो आई डोंट लर्न द फॉर्मूला, ऑल आई डू इज रीड द थ्योरी एंड उसके बाद प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स, उससे फॉर्मूला इजीली आ जाते हैं. एंड आई ट्राई टू एनालाइज द फॉर्मूलाज कि इसमें से इस क्वेश्चन में हम लोगों ने वैल्यूज चेंज की, तो ये जो हमारा फाइनल आंसर है ये कैसे चेंज होगा, कितने रैपिडली चेंज होगा. दैट इज व्हाट आई एक्चुअली डू. And here is okay, Mona and please answer my question, dear. Why do we need physics? Uh, okay, so your question is why do we need physics? Is that even a question? कि आपको फिजिक्स को की जरूरत क्यों पड़ेगी, हमें फिजिक्स की जरूरत क्यों है. वेल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लैपटॉप, ये फिजिक्स की वजह से, देन लाइट बल्ब दैट इज ड्यू टू फिजिक्स, और द इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज कमिंग टू योर होम, वो भी फिजिक्स की वजह से. डिफरेंट ग्रेट फिजिसिस्ट ने डिफरेंट फील्ड्स में वर्क किया था, उसकी वजह से आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है. तो ऑब्वियसली वी नीड फिजिक्स. एंड जब हम लोग इस यूनिवर्स को, इस नेचर को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तब हम लोग और भी इवोल्यूशन कर सकती हैं. एंड इन फैक्ट आई विल से कि फिजिक्स इज कंसिडर्ड द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल ऑफ साइंसेस. ऐसा नहीं कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, it is just that many people can't see things from that perspective as a physicist sees things. That is the thing. So physics is a fundamental subject, not that much difficult. Yeah, and this is true कि किसी को भी फिजिक्स तब पसंद नहीं आती जब इसमें मैथ्स एंड इक्वेशंस की बात होती है. But this is how physics is actually done. This is how you get all these technologies, and all these luxuries also come from physics. The C channel, what is your future as aspiration? Do you plan to become a professor as your teaching is so good? Well, actually, you read my mind. Yeah, I plan to become a professor of physics and mathematics. Well, maybe mathematics, but mainly I want to be a professor of physics. Okay, and here is FF Pita. Sarim sir, as you know, as you know, energy can't be created nor destroyed. So according to Big Bang, when there was an explosion, the lot of energy was emitted. So my doubt is, are we living inside an energy or particle? Well, that's the great question, and a great approach to looking at this particular thing. कि जब बिग बैंग हुआ था, इन दैट एक्सप्लोजन, तो वो जो एनर्जी थी एमिटेड, तो हम लोग क्या एक एनर्जी या फिर किसी पार्टिकल में रह रहे हैं. सो एनर्जी और पार्टिकल, वेल बेसिकली अगेन वी डोंट नो. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, इन फैक्ट द एंटायर कॉस्मोलॉजी अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं. मे बी बाय यूनिफाइड फील्ड थ्योरी हम लोग समझ सकते हैं. वॉट एवर क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड, देन ऑल आई विल से इज, हो सकता है जब यूनिफाइड फील्ड थ्योरी हमारे पास हो, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, तब हम लोग समझ पाए. बट एज फार एज आई नो, यूनिवर्स को मैं एक एनर्जी या फिर पार्टिकल तो नहीं कह सकता हूँ. इंस्टेड अ यूनिवर्स इज जस्ट स्पेस अराउंड अस, दैट एवरीथिंग, ऑल द एनर्जी एंड पार्टिकल व्हेन कम्स टुगेदर, तो इसे हम लोग एक यूनिवर्स कहते हैं. थिंग्स गेट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड जब मल्टीवर्स की बात आती है, क्योंकि यूनिवर्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं दैट व्हेन एवरीथिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, दैट इज द यूनिवर्स. लेकिन जब मल्टीवर्स की बात होती है, सो देयर आर सो मेनी यूनिवर्सेस, थिंग्स गेट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड. आशुतोष कुमार, व्हाट इज यूनिफाइड फील्ड थ्योरी? यूनिफाइड फील्ड थ्योरी फिजिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं एक सिंगल थ्योरी जो कि
नेचर के सारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस को समराइज करेगी, द ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड ये थ्योरी इस यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करेगी, एंड वी डोंट हैव अ थ्योरी येट। Ghost unstoppable. Why do we take angular variables direction in axis direction while its magnitude is in that plane in which particle is moving? Well, that's a great question. लेकिन अगर हम लोग किसी भी पार्टिकल का, सिंस यहाँ पे अगर से हमारे पास एक रोटेशनल मोशन हो रहा है या फिर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, आपके पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बेसिकली देखेंगे, वी सेट इज आउटवर्ड और समथिंग लाइक दैट। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन या फिर यहाँ पे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, चलो मोमेंटम ले लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, बेसिकली आउटवर्ड। इसको निकालेंगे कैसे? यू यूज द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एम वेक्टर वी हो जाएगा। अगर ये पार्टिकल कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करे, से इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी यहाँ पे है, दिस इज द वेक्टर आर, तो बेसिकली मिला सिंबल मैं इस डायरेक्शन में लूंगा, सो दिस इज हाउ पार्टिकल इज मूविंग, एंड हमारी इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम नेटवर्क इज लोगों ने इस डायरेक्शन में एज लिया लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में लेंगे, थिंग्स गेट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना कि लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाएंगी, व्हिच वी रियली डोंट वांट टू हैपन। क्योंकि कांस्टेंट, अगर हमारी कांस्टेंट से सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मोमेंटम तो इंक्रीज कर नहीं सकती, चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीज नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इसे हम लोग परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल मोमेंटम लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। हम लोग एट टैब इफ दिस इज नहीं चलो Priyanshu Singh, what the theory of everything is main about? Theory of everything mainly है बड़ी question of mathematics, the multiple equation of mathematics, e power iota pi plus 1 equals 0, जिसने मैथ्स के 4 फंडामेंटल कांस्टेंट को समराइज किया है। सो बेसिकली वैसे ही हम लोग इसमें देखते हैं क्या कि फिजिक्स में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको समराइज करेंगे। Team KTX1, how to study more books in less time. Well, this just happens as you are reading, कि जैसे हम लोग रीड करेंगे हमारी इंक्रीज स्पीड, हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, एंड वी कैन स्टडी मोर इन लेस टाइम। लाइक आई विल टेल यू कि yesterday I was studying a chapter and I was not getting anything in that chapter. I spent like 6 hours on a single topic and मुझे कुछ नहीं समझ आया, but I just continued on that, and at night when I was studying the same chapter, मैंने 6 hours में एक topic भी नहीं समझ पाया, but I just continued, and at night I gave 2 hours on that chapter, and 2 hours में मैंने पूरा chapter पढ़ लिया। That is how it actually happens. You give time on that. So even if at first you have to give so much time at learning so less things, लेकिन जैसे आप पढ़ते जाओगे, that's the state of flow as we define it psychologically. तो वहाँ पे you just have to exert no mental effort. वहाँ पे कोई mental effort की जरूरत नहीं पड़ती है. All you have to do is just go through that and everything is cleared easily. Prince Tambolia, what are the pathways to get into astrophysics? Please take my question. Also, why did you start doing physics? Well, pathway to becoming astrophysics, अगर देखें officially, as you call it, so through degrees and all, basically after completing 11th and 12th from PCM specifically, PCM क्योंकि maths चाहिए, तो PCM specifically आप किसी भी से यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, where you have taken physics as major यहाँ पे, and astrophysics specifically, क्योंकि physics and astrophysics you can call कि they are like the same things specifically. Astrophysics में physics use होता है as you call it. उसमें आप एक एस्ट्रोफिजिक्स की डिग्री ले सकते हो, यू कैन स्पेसिफिकली मेजर इन एस्ट्रोफिजिक्स, देन यू कैन हैव अ मास्टर्स डिग्री, फिर आप एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी करोगे। इट्स लाइक वेरी मच द सेम प्रोसेस जब आप नॉर्मली थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, द बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी, लाइक दे आर द सेम प्रोसेस, इज जस्ट द सेम।
Connection is unstable. नहीं से Unstable. No. Maybe that's so early. Well, but it's showing right here your connection is unstable. Okay. Here is Riya Singh. What about HC Verma? HC Verma basically यूज होती है कि जब आप जे की प्रिपरेशन करोगे या फिर नीट की प्रिपरेशन करोगे या फिर 11th and 12th में आप स्टडी करोगे. HC Verma is really good book. It's really good book. But I specifically go for other books like अगर आप physics में specifically interested हो, so I'd say to go for books like Resnick Halliday Walker and University Physics, Physics for Scientists and Engineers. So these are some like really books specifically for physics, and Feynman lectures. Nobody can neglect this fact that they are like best books on physics. And उसके अलावा problem solving में that's like IE Rodov and SS Rodov. So that's what I have been through. Sasta Aditya, what is electric potential difference? Potential difference basically हमारा difference in electric potential between 2 points होता है. इसे हम लोग define कर सकते हैं कि दोनों points से अगर मुझे एक point से दूसरे point तक जाना है initial से final, तो मुझे जितना हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करेगी उसको पर यूनिट चार्ज बेसिस पे देखें. सो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. And Ashu Goyal, which anime are you seeing? Well, currently I'm watching Classroom of the Elite. PCM universe, how can how I can become like you? I have a desire of becoming an astronomer. So what all thing I can do to become like you and an astronomer? Well, I wouldn't exactly say to just become like me. Rather, yeah, it's good to become an astronomer rather. एक एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए अगेन द सेम प्रोसेस, आई से द सेम प्रोसेस. जैसे आप एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनते हो, जैसे आप एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनते हो, तो वैसे ही आपको एस्ट्रोनॉमर बनना है. यू नीड BSc degree, then an MSc degree, then a PhD in astronomy. That is how you become it. उसको आपको 11th and 12th PCM से करना पड़ेगा. Ghost Unstoppable, can you please explain the first and second Newton's laws of our law of motion? Because I understood its application part, but didn't understand these laws. Can you please explain the first? So explaining first and second समझ आ गया तो first basically समझ आ ही जाता है. Let me rather explain second. It will be easier क्योंकि तब आपको first भी समझ आ जाएगा उसके question से. Second law of motion basically ये कहता है कि जो हमारा force है, किसी भी object को जब आप push करोगे, pull करोगे, जब उस पे फोर्स एक्सर्ट करोगे, तो जिस रेट से ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे. बेसिकली ये फोर्स एंड एक्सेलरेशन रिलेटेड होते हैं. मतलब एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जिस रेट से जितनी तेज उस पार्टिकल की या तो स्पीड चेंज हो रही है या फिर उस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन. The rate at which, with respect to time, at which the velocity is changing, speed with direction, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस एक्सेलरेशन के एंड आल्सो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट की. दैट इज F इक्वल्स ma हमें मिलता है, k की वैल्यू 1 हो जाती है एक्सपेरिमेंटली. दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इसमें आप देखो, जब आप फोर्स की वैल्यू जीरो करोगे, मास तो जीरो हो नहीं सकता, तब आपको एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा. इसका मतलब जब कोई फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करेगी, नेट फोर्स, तब उस पार्टिकल की स्पीड या फिर डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है. That is first law of motion. So second, first can be easily derived from the second. Look, it isn't coming. It isn't coming. The connection is unstable. Can you please write if I'm still visible and audible?
Can you please tap there if I am visible and audible? Yes, I see. Okay, I am. And there was, uh, okay. Uh, Prince Thambalia, why did you start studying physics, doing physics? It just happened that I got interested in and I'm studying it. There's no specific why, the answer to why. And there was someone asking me if I've seen Attack on Titans. Well, basically, it's pretty long series, that's why I haven't watched that. Well, I'm planning to watch sometime later. Um, Abhinav Singh explain electric field line. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली अगर देखें तो ये बेसिकली एक वे होता है टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइंस हम लोग ऐसे लाइंस या कर्व्स ड्रॉ करते हैं जिनके टैंजेंट किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन मिलती है दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन and if you want like full detailed explanation on it electric field line तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स लाइक मैंने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं फील्ड्स लाइक मैंने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं किया था मैंने पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये सारे मैक्स अचीव करें वेल बेसिकली अगर आपको बिना रटे क्वेश्चन एंड आंसर कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर कोई मैथमेटिकल सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इटसेल्फ कोई भी मैथमेटिकल कंसेप्ट है लाइक सॉरी हमारा कोई मैथमेटिकल सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इटसेल्फ तो उस केस में आप थ्योरी को अंडरस्टैंड करो उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो एंड देन यू कैन इजीली गेट इट बिना क्वेश्चन आंसर्स रटे आप इजीली कर सकते हो when I read that line like Rate, so I usually remember like many people claim कि मैंने बस I have craved all of it or something like that. And like there are so many people who are even surprised कि मैं इतनी early age पे ये सब कैसे कर लेता हूँ. But I'm still surprised कि if I could really get JEE level की physics when I was in fifth standard and मैंने बस lockdown में ये सब कर लिया, I am still shocked कि अभी तक why am I not even going at MSc level or something. I really want to teach MSc level physics or something. And it will be very soon. I promise that. Okay, and here's PW inside. Will you win Nobel Prize? Well, obviously it's a dream and it's a dream of everyone who wants to become a physicist or a theoretical physicist कि उन्हें Nobel Prize मिले and it's also my dream. लेकिन बहुत लोगों का ये dream रियलाइज नहीं हो पाता है कुछ रीजंस होते हैं ऐसा भी होता है कि उनकी डिस्कवरीज बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग हो लेकिन रीजंस होते हैं कि उनकी डिस्कवरीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो पाए इन दैट टाइम लाइक कंसीडरिंग द ग्रेट प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग उनकी डिस्कवरी उस टाइम ब्लैक होल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो पाए एंड ही वाज रियली नॉट अवॉर्डेड नोबेल प्राइज एंड सिंस अब हमें ब्लैक होल्स में बिलीव होता है कि इमेज हैज बीन टेकन प्लस हॉकिंग रेडिएशन की थ्योरी कंफर्म है वर ही अलाइव नाउ ही वुड बी अवॉर्डेड सर्टेनली नोबेल प्राइज but sadly he's not among us. So even if someone is not getting Nobel Prize, it isn't that that particular physicist isn't great. There are like many reasons, many kinds of methods for selection for Nobel Prize. But of course, it's my personal dream to win. Pavan Singh, why do we not take upthrust force in derivation of variation of pressure? Basically, variation of pressure with what? अगर आप वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट की बात कर रहे हो जो कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं तो उसमें बेसिकली अपथ्रस्ट प्रेशर उसमें बेसिकली अपथ्रस्ट फोर्स सॉरी रादर व्हाट यू आर टॉकिंग आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट बुयंट फोर्स और समथिंग उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास कोई भी फ्लूइड का एलिमेंट है उसको आपने ले लिया तो ऑब्वियसली उस पे जब हम लोग वो बुयंट फोर्स अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे वाई एलिवेशन पे है तो उसके अकॉर्डिंग एक बुयंट फोर्स लगाते हैं एंड उसके बाद y प्लस dy पे एक डिफरेंट बुयंट फोर्स
That is what we are saying. So actually we take that into account. But if you are talking variation of pressure in different kind of thing with different things, so that can be different. Please write over there. Okay. Santu, H rho G. H rho G is basically what I can say. H is the height, rho is the density, and G is the acceleration due to gravity. So obviously variation of pressure का formula है. The say pressure at any point minus में उसका atmospheric pressure या फिर दूसरा कोई reference pressure हो जाते हैं. That is the thing. मतलब ये somehow Gauss pressure का formula है, as far I can say. And Sasta Aditya, are you teach bio? Well, of course not. I'm not like कि I can do physics of this level या फिर maths of this level. So I'm expert in every particular field. No, it's really not like that. मुझे chemistry भी like नहीं आती है, and bio obviously not. I'm really not interested in bio. हाँ, 1-2 personalities. हाँ भाई, आपके आपके मेन इंस्पिरेशन कौन है? वेल मेरे मेन इंस्पिरेशन मैं कहूँ, मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था बाय सीइंग द लाइफ स्टोरी ऑफ प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग. aside from him I'm very much inspired from Sir Isaac Newton and Subramanian Chandrasekhar. Attractor zone, what is kinetic energy और potential energy? Kinetic energy and potential energy हम लोग डिफाइन करते हैं. Kinetic energy वो एनर्जी होती है जो कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस करता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की डिफाइन होती है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं, सिस्टम की डिफाइंड होती है, जिसमें कैसे वो सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स अरेंज्ड हैं वो उस पर डिपेंड करता है, उस अरेंजमेंट पे, कन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी. Pawan Singh, what is difference between hydrostatic pressure and Gauss pressure? Hydrostatic pressure, or rather, I rather prefer calling it absolute pressure, right? And Gauss pressure में क्या difference है? Hydrostatic pressure या फिर absolute pressure and Gauss pressure में कुछ ऐसा difference है कि absolute pressure जो वो specific pressure है ही, the pressure जो कि आप normally calculate करते हो, the dF over dA जो आप normally calculate करते हो, that's absolute pressure. कि वो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ प्रेशर उस पॉइंट पे क्या है. गॉस प्रेशर यूज होता है कंपेयर करने के लिए कि वो प्रेशर आउटसाइड या फिर डिफरेंट से सरफेस के प्रेशर से कितना बड़ा है. लाइक से आपके पास एक टायर है, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल दैट आई फ्रीक्वेंटली यूज इन डिस्क्राइबिंग द कांसेप्ट ऑफ गॉस प्रेशर. टायर के अंदर जो प्रेशर है दैट इज यूजुअली दैट डीएफ ओवर डीए वाला टर्म, द हाइड्रोस्टैटिक या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर. देखिए अगर उसे मैं कंपेयर करूं टायर के बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कि टायर के अंदर का एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना बड़ा है, दैट इज गॉस प्रेशर. यानी कि द एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस में बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स गॉस प्रेशर. यशवंत प्लेज, सर हिग्स फील्ड के बारे में बताइए. वेल हिग्स फील्ड हम लोग मानते हैं कि एक ऐसी काइंड की फील्ड होती है जो कि सारे मासेस को पास, सारे रादर पार्टिकल्स को मासेस प्रोवाइड करती है, कि यूनिवर्स में जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनके पास मास कहाँ से आए, क्योंकि वो हिग्स फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं. जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे उतना ज्यादा उन्हें मास मिलेगा, जितना कम इंटरैक्ट करेंगे उतना कम. लाइक से प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं तो उनका मास हाइयर है, इलेक्ट्रॉन कम इंटरैक्ट करते हैं तो उसका मास लोअर है. एंड स्पेसिफिकली आई ऑल्सो से कि मैंने कुछ दिन पहले सिंगल एक फैक्ट बताया था कि एक्चुअल में इट्स बीन रिसर्च इज गोइंग ऑन नाउ कि इस यूनिवर्स में जितने पार्टिकल्स हैं उसमें से सिर्फ 1% मास हिग्स फील्ड से आता है, बाकी जो 99% मास होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से समहाउ एसोसिएटेड है. अंडरस्टैंड भाई, अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें? वेल इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट. लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे बताऊँ, मैंने कुछ देर पहले और रादर इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लाइव स्ट्रीमिंग बताया था कि अगर इंग्लिश बोलना सीखना है सो इट इज बाय प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस करो, जिससे भी बात करो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, इंग्लिश की बुक्स पढ़ो एंड अपनी वोकेबुलरी इंक्रीज करो, वर्ड पावर इंक्रीज करो. दैट इज हाउ इट हैपेंस. एंड उसके अलावा यू कैन वॉच दैट वीडियो, इट माइट बी हेल्पफुल. लॉल 3 लेन, सर आप मेरे साथ जे एडवांस दोगे तो मुझे बताइए मैं अभी से क्या क्या करूं. वेल नॉट दैट मच टू वरी अबाउट. से अगर आप जे एडवांस की लाइक प्रिपरेशन कर रहे हो
तो ऑब्वियसली 11th 12th में प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। आई वुड से कि 11th 12th के रादर 9th एंड 10th में आप सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। आप जितने भी टॉप रैंकर्स देखोगे मोस्टली उनके 9th एंड 10th में सिलेबस कंप्लीट होती है। दिस इज फैक्ट। अगर कोई ऐसा बताते हैं कि 11th वेस्टेड, लाइक आई विल बी टेलिंग फ्रैंकली कि इफ समवन सेज कि 11th वेस्टेड, 12th हाफ वेस्टेड, या फिर 12th 70% वेस्टेड, सिलेबस somehow like 10%, 15% covered था, and I cracked JEE or NEET in 3 months, 2 months or 1 month. तो most of the time ये like fake होता है most of the time. Though there are some great people जिन्होंने actual में crack किया in just a few months, a couple of months, लेकिन most of the time ये fake होता है, right? That is, you might be understanding. सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप 9th एंड 10th में अगर सिलेबस कंप्लीट करते हो, 11th एंड 12th में आप बस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तब आपकी टॉप 100 में रैंक आ सकती है, टॉप 50 या टॉप 10 में आ सकती है। यू कैन वॉच लाइक द इंटरव्यूज ऑफ द टॉप रैंकर्स। सो मोस्ट ऑफ देम लाइक आई विल बी टेलिंग कि उन लोगों ने 9th एंड 10th में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं एंड 11th एंड 12th में वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस जोन, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली एक थ्योरम है फिजिक्स में एक्चुअली, एंड दिस इज कि किसी भी पार्टिकल पे जब वर्क होता है तो जो टोटल वर्क उस पार्टिकल पे कंप्यूट करे तो वो वर्क हमेशा उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होता है वो उसके इक्वल होता है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें, काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि उस पार्टिकल के स्पीड से रिलेटेड होती है। जिस पार्टिकल के पास स्पीड होता है, मोशन में होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इसकी चेंज इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन। एंड ये हो गया, एंड गेस द टाइम इज ऑलरेडी ओवर टुडे। इट वाजंट 50 minutes का लो। ओके, लेट्स डू इट 50 minutes टुडे। ओके, I2 personality, or rather 1-2, guess that's I2 personalities. What is electromagnetic wave? I didn't understand. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक काइंड की वेव होती है। वेव आपको पता होगा, वेव एक डिस्टर्बेंस किसी भी फील्ड में या फिर किसी मीडियम में हम लोग डिस्टर्बेंस करते हैं तो वहां से एक वेव प्रोड्यूस होती है। मतलब डिस्टर्बेंस जो कि ट्रैवल कर सकती है इन द मीडियम या फिर इन द फील्ड, उसे हम लोग एक वेव कहते हैं जो कि ट्रैवल कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक की कंबाइंड फील्ड जो होती है, आई गेस कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का तो कंसेप्ट पता होगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो कंबाइंड फील्ड होती है ना, जब इसमें आप डिस्टर्बेंस करते हो तब जो काइंड की वेव प्रोड्यूस होती है, क्यों होती है? इसका मतलब उन्होंने कंक्लूड किया कि लाइट बेसिकली खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस करोगे तो लाइट प्रोड्यूस होगी। Ashu Goyal, will you give Physics Olympiad this year NSCP? Of course, I'll definitely go for it. Physics Olympiad, that is what I have to actually do. NSCP National Standard Examination in Physics. And यहाँ पे basically, since guess if you are talking about this year, so this is 2022 and I'm currently in 8th standard, so this year possible नहीं होगा. Rather next year I can wait next year के end में yes I can register, so there will still be age limit. So that is, and 9th से start होता है plus that's the age limit, so next year के end में I can be eligible for that and I'll definitely go for it, as I'm saying. Aditya Babu, is change in potential means release of energy? Can you please explain? Guess the sentence isn't meant that much clear, but guess I can understand कि आप कहना चाह रहे हो कि जब भी कोई पार्टिकल डिफरेंट पोटेंशियल वाले पॉइंट से मूव कर रहे तो वहां पे क्या ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, डिड यू से कन्वर्जन ऑफ एनर्जी? यस, चेंज इन एनर्जी आपने कहा था, रिलीज ऑफ एनर्जी। बेसिकली क्या होता है कि जब भी एक पार्टिकल मूव करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लेते हैं, तो जब ये डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट पे मूव करेगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। तो इस पे वर्क होता है जो कि इस स्पेसिफिक, हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये जो एनर्जी होता है वो फील्ड में स्टोर हो जाता है।
एंड इसी को हम लोग जब रिवर्स कर सकते हैं, इसी को रिवर्स कर देंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी है ये रिलीज होगा. सो समहाउ मूविंग बिटवीन डिफरेंट पोटेंशियल वाले पॉइंट्स इज जस्ट द स्टोरिंग ऑफ एनर्जी एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी. Shinde, yes, that's the name. When you started studying like for advance, I can say from childhood. Basically, जब मैं छोटा था, I was like still yet I'm in my childhood. I can say कि जब मैं like UKG में था, first standard, second standard, तब मैं English literature पढ़ता था. And since उस टाइम में जब English literature पढ़ता था, so I was reading like advanced B and MA level वाली English literature. But then I came in the field of physics. जब मैं ने फिफ्थ पास किया एंड इट वाज द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19, तब मैं फिजिक्स में आया. फ्रॉम रीडिंग नॉवेल्स एंड लिटरेचर एंड प्लेज एंड ड्रामास में फिजिक्स में आया. सो बेसिकली दिस ऑल हैज बीन डन सिंस लॉकडाउन. लोल 3 लेंथ. सर इंजीनियरिंग में बेरोजगारी है कि नहीं? प्लीज रिप्लाई. आई विल नॉट बी एबल टू डिसाइड नीट और जेई. वेल एक्चुअल में if your question is engineering में बेरोजगारी नहीं है. Yeah, that's true somewhere. Now, this is a fact कि इंडिया में there are so many engineers. इंडिया में there are so many engineers. So obviously, and not everybody are like on that level as if you are looking at top level engineers like Sundar Pichai and all. Sundar Pichai, the CEO of Google and CEO of other great companies. तो बेसिकली लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में कॉलेज भी नहीं मैटर करता. मैटर करता है आपने कितने अच्छे से इंजीनियरिंग किया है. कॉलेज भी नहीं ज्यादा मैटर करेगा. वो एक टैग मिल जाता है कि आईआईटी या फिर एनआईटी. बेसिकली आपका इंटरेस्ट मैटर करता है आपने कितने अच्छे से इंजीनियरिंग किया है. तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं. नॉट ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट लेवल सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट, नॉट ऑल ऑफ देम हैव दैट मच हाई प्लेसमेंट. सो बेसिकली आप कितने अच्छे से आपने अपनी इंजीनियरिंग करी है. अच्छा कॉलेज मिल जाता है सो इट्स ओके, इट्स बेटर. लेकिन अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला देन इट डजंट मैटर. आप अच्छे से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लो. इट डजंट मैटर रियली. एंड just have your interest, follow your passion. It can really be done. You can be placed at top. Danish call. Please pick my question. Okay. Have you made yourself to learn a lot of physics? Do you possess the same amount of knowledge in other subjects like biology and maths? Well, since अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो ऑब्वियसली मैंने बुक्स पढ़ा. मैंने जस्ट बुक्स पढ़ा. मैंने यूट्यूब एंड गूगल दीज थिंग्स का बहुत ज्यादा हेल्प नहीं लिया. एट सम टाइम्स लाइक आई वॉच आशीष अरोरा सर के लेक्चर्स फ्रॉम फिजिक्स गैलेक्सी एंड वॉल्टर लोविन के लेक्चर्स. सो बेसिकली मैंने लेकिन ऑनलाइन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं ली. ऑफ कोर्स मैंने बस बुक्स पढ़ा एंड आई बिलीव दैट इट कैन रियली बी डन. आई जस्ट हैव टू स्टडी. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थिंग. आई हैव टू स्टडी. एंड मेरे पास लाइक इतना नॉलेज नहीं है इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. एंड अगर मैं मैथ्स की बात करूं, हाँ, आई हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, नॉट लाइक दैट मच इन एज इन फिजिक्स. लेकिन मैथ्स मेरी अच्छी है एज आई कैन कंपेयर इट टू अदर सब्जेक्ट्स. एंड माय मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर रियली गुड. मोहम्मद अहमद, मेरा क्वेश्चन लेना भाई. व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो बेसिकली ये एक वेव इक्वेशन है इन क्वांटम फिजिक्स. जैसे क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, कैसे टाइम के साथ ये सब चेंज होते हैं. देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज इन क्लासिकल फिजिक्स जो कि आप फाइंड आउट करते हो फ्रॉम डिफरेंट एंड डिफरेंट इक्वेशंस. लेकिन क्वांटम फिजिक्स जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वांटम फिजिक्स में ये सारी इतनी सारी क्वांटिटीज लाइक मेजर नहीं कर सकते. क्वांटम फिजिक्स में एवरीथिंग दैट यू कैन नो इज उस पार्टिकल की वेव फंक्शन. ये एक फंक्शन होती है किसी भी पार्टिकल की, तो आप उस पार्टिकल की वेव फंक्शन ही सिर्फ जान सकते हो. किसी पार्टिकल की वेव फंक्शन आपको जानना है तो उसके लिए आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. ऑल्दो आई डोंट नो द इक्वेशन ऑफ माई सेल्फ, लाइक आई कैन रिसाइट इट दिस वे or something. It's pretty long equation, and plus I'm not an expert of quantum mechanics, not yet. Still I'm studying it and I'm working hard, trying my best over it. So but yeah, someday I can make a video on Schrodinger equation because it's gonna be really fun.
Okay, this is a good question. Tractor zone, please explain conservative and non-conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो कि पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है. लाइक से मैं अगर एक एग्जांपल लूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आप ले लो. जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स को देखोगे ना, जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसमें इंटीग्रल आ जाता है फ्रॉम से हाइट y1 टू y2 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स टाइम्स में ये छोटा सा एलिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल. लेकिन आप देखोगे इसमें ये जो इंटीग्रल आता है ये y1 टू y2 होता है. मतलब आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जा रहे हो, लेकिन किस रास्ते से जा रहे हो इट डजंट मैटर. आप इनिशियल एंड टू फाइनल पॉइंट किसी भी रास्ते से जा रहे हो उसके लिए वर्क डन सेम होगा. तो ऐसे जो काइंड के फोर्सेस होते हैं जिनके लिए जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, उन्हें कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं. जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है. यानी कि नॉट ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिफरेंट से आप पाथ से जा रहे हो तो इनका जो हमारा बेसिकली वर्क डन बाय दीज फोर्सेस होगा वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स हो जाएगा. लाइक फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फोर्स देखोगे आप, और रादर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कंजर्वेटिव फील्ड होती है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है. लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बिना किसी सोर्स के क्रिएट भी कर सकते हैं इंड्यूस करके, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बढ़ते हैं. एंड ये जो काइंड की फील्ड होती है ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है. नॉर्मली स्पीकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स, फील्ड इसकी फोर्स कंजर्वेटिव होती है. बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड. ये पाथ पे डिपेंड करती है इसका जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स होगा. So guess it's already been late, and I guess that was all for today. It was really fun to talk all of you guys after so long. So we'll be live some another day, and that was all for today. And thanks to you always, and bye. Good night.